like Archit mentioned, I'll also, quickly introduce myself. I started my career in audit, worked for around 5 years there in Big Four. And then I moved to financial due diligence. I've been working in FDD for over 4 years now. And let's see how many more years to go in FDD in Big Four. So I think before we start the session, let me just share my screen first. 1 minute. Okay, is my screen visible? Yes. Yes. Okay. So before we start, I think Archit already mentioned what we are going to cover today. So we're going to cover, an overview of mergers and acquisition. What is merger and acquisition? We'll move on to due diligence and then discuss a little bit more about financial due diligence in specific. So before we sort of deep dive into these topics, can anyone tell what M&A is? Anything you know about mergers and acquisitions, anything about deals that you know? Let's make the session interactive. Anybody can raise hand and unmute your mic and speak, or feel free to use the chat as well. Guys, either in the chat or please unmute and speak, guys. Voice issue, Kirti. 2 participants have raised their hands. Yes, Sishank. So M&A is basically a corporate action where companies who tend to grow inorganically merge with other entity of maybe same business line or different business line. So basically, the Big Four structure the deal in such a way that the merger can take place without much hassle. Absolutely. Very close answer. Why don't Akshat, why don't you go ahead? 1 second. Who has raised his hand? Akshat. Akshat, please unmute yourself. Sir, merger and acquisitions are when a company merges itself with other company and perform and continue to perform joint operations, joint business with that company. And acquisition is when a company acquires other company. Like in case of NDTV, we have seen that Adani have haven't acquired NDTV. Absolutely. Should we give a do you chance to also want to Juhi? go And ahead? Yeah, Bhavya has also absolutely. raised his hand. Sir, merger and acquisition is basically when two companies are going to do business together with transaction of their assets and liabilities. Combination combine करना उनके assets and liabilities को. Like for example अभी हाल ही में JK Shah classes and Vedanta classes का merger हुआ था. Acquisition किया वेदांता ने JK Shah को. Right. Bhavya, would you like to answer also? Yes, sir. In merger, two companies come together to do business with a pool of their assets and liabilities together. In acquisition, the bigger company acquires the smaller company, and then they pool their resources to do the business together. And our role in M&A is to facilitate the deals and set the prices for their assets and liabilities all together. Right. Absolutely. So let's take a look at what exactly merger and acquisition is. All the answers were, very, very close. So M&A is nothing but, it's a process of companies buying, selling, or combining businesses. Mergers को अगर आप अलग से देखेंगे तो of course when the assets of two companies merge together, it's called a merger. Acquisition is when one company is acquiring another company. This will, give a more clear pictorial representation. So basically, some of the examples would be like when Vodafone bought Hutch SR, that would be
called as an acquisition, but recently, as you would all know, Vodafone and Idea got merged. So that was actually a merger. So जब दो कंपनी जुड़ जाती हैं तो उसको merger कहते हैं. जब एक कंपनी दूसरे को acquire करती है, that's acquisition. And it's actually M&A is, it might seem like a very complex term, but आप अपने आसपास देखोगे, everything is, all the news that you would read, there will be so many things going around, is nothing but M&A. As basic as even Google acquired Android in 2005. So Google in itself did not create Android. Google acquired Android. एक छोटी सी कंपनी होती थी उस टाइम पे 2005 में. They acquired it, and look where Google is now because of Android. So there are lots and lots of examples of mergers and acquisitions. Not recent years. It has been going on since ages. एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर आया है सर. कॉर्पोरेट ये मर्जर विद कॉर्पोरेट मैरिज बिटवीन टू और मोर कंपनीज. Absolutely. It's a corporate marriage between two or more companies. Great. So mergers and acquisitions पे अब हम समझते हैं what is, how the mergers and acquisition takes place actually. So I put together a mergers and acquisition process. It may seem complex on the screen, but let us break it down. Let us try to understand M&A में होता क्या है. M&A में होता क्या है, and where all are the opportunities for us chartered accountants, where all we can play a role, and how can we get there, right? So this is a typical mergers and acquisition process. Let's start from sell side. Of course, okay, so सबसे पहले M&A में जब भी हम बात करेंगे, it will always be from two sides. One will be a sell side and one will be a buy side. हमेशा एक buyer का perspective अलग होगा. Whatever the matter is, there will be always two perspectives. One will be buyer's perspective, one will be seller's perspective. Let's start and let's focus on how will a seller start the M&A process. अर्चित सर का एग्जांपल लेते हैं. अर्चित सर ने थिंकिंग ब्रिज बनाया है. अर्चित सर इज very happy with how things are progressing, but he still wants to expand more, right? He has already entered into the CA field. He's doing very good. He wants to enter into the JEE की भी classes लेनी है उनको. Engineering के बच्चों को भी पढ़ाना है उनको, but naturally अर्चित सर तो CA हैं, engineer तो है नहीं. सब क्या करेंगे वो? What is the best way? तो अर्चित सर ने अपनी एक रिसर्च की टीम बिठाई है. सबसे पहले तो उन्होंने बोला है अपनी इंटरनल रिसर्च टीम को, बड़े सारे लोग कॉर्पोरेट फाइनेंस टीम में और रिसर्च टीम में हायर किए हैं. उनको बोला है रिसर्च करो इस मार्केट में, व्हाट इज द टोटल मार्केट साइज, थिंकिंग ब्रिज का कितना मार्केट शेयर है, इंजीनियरिंग फील्ड में अगर एंटर करना हो तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू एंटर, व्हाट इज द मार्केट शेयर दैट थिंकिंग ब्रिज कैन कैप्चर, who can be the potential partners which Thinking Bit can enter into partnership with, right? And by partnership, I mean it could be many different ways of mergers or acquisition Thinking Bridge could think of, right? They can think of selling a minority stake, right? By getting an expert in engineering field. They can sell the entire company. They can do a lot of things, right? So सबसे first step होगा doing the research, detailed research on what is required to be done for the benefit of the company. What would be the next step after the research would be strategizing, right? So what strategy would be best for Thinking Bridge to expand? So अब अर्चित सर ने अपने टीम के साथ बैठ के डिसाइड कर लिया कि बॉस 25% स्टेक में लिक्विडेट कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं कर सकता. तो उन्होंने बोला ओके, मैं अपना 25% स्टेक लिक्विडेट करके एक इन्वेस्टर लाऊंगा जिसकी एक्सपर्टीज होगी इन टेकिंग कोचिंग क्लासेस इन इंजीनियरिंग फील्ड, राइट? सो अब ये डिसीजन हो गया है. सो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप बाय थिंकिंग ब्रिज? Thinking Bridge will then proceed towards diligence. What is diligence?
there will be in-depth analysis of the historical numbers, and there will be key deal indicators prepared for Thinking Bridge. Key deal indicators क्या होते हैं? We'll talk about that in a little bit more detail in next few slides. But key deal indicators prepare होंगे, एक diligence report prepare होगी, sell side diligence report. Sell side diligence report में focus होगा historicals पे. Now, it is important to understand this is a sell side. So this is a seller diligence report. So Thinking Bridge will appoint the consultant to prepare that report. हो सकता है अर्चित सर खड़े हो जाए वहां पे गन लेके कि अच्छी सी रिपोर्ट बनाओ, but that's consultant's duty to report all of the findings, whatever a consultant finds in during a diligence. So diligence, as I told you, will be focused on the historical numbers. Once the sell-side diligence report is finalized, it will be used as an input for valuation of the company. Valuation team एक अलग होगी, due diligence team एक अलग होगी. Due diligence report बनी, उसमें क्या होगा अभी हम उस पर बात करेंगे. उसके बेसिस पे valuation team business model बनाएगी. Historical numbers जो diligence report का output होंगे, that will be used to prepare a business model. उससे एक Thinking Bridge की valuation निकलेगी. Now, Thinking Bridge knows कि उसकी value कितनी है उनके हिसाब से. Then they will invite multiple bidders. There will be multiple bidding rounds from the market. अब वो बोलेंगे कि हमें अपनी वैल्यू पता है, हमने ड्यू डिलिजेंस करवा लिया, अब आप लोग बताओ आप मेरे 25% स्टेक के लिए कितने कितने पैसे दे सकते हो. How many people are interested from the market? That is called bidding rounds. All of this, a lot of this, investment bankers help in a lot of this process because they have connects that, okay, XYZ private equity or XYZ institution or XYZ company is interested in buying institution like Thinking Bridge, right? Once the bidding rounds are carried out, the seller has decided, okay, we'll go ahead with XYZ company. So there were, let's say 4 companies. एक बार आप buyer side से आ जाते हैं. Buyer भी same यही करेगा. सबसे पहले अपनी strategy and research करेगा. Then M&A world में what the company that is getting sold or purchased is called target. So the word is target. So buyer will screen multiple targets. वो भी सोच रहा होगा, okay, मुझे expansion करना है. So उसके सामने 50 choices होंगी कि okay, मैं क्या-क्या expand कर सकता हूँ, क्या-क्या companies खरीद सकता हूँ. उसमें से let's say buyer was Byju's ने Thinking Bridge को Thinking Bridge को screen किया और Thinking Bridge उन्हें पसंद आ गया. Thinking Bridge को भी Byju's पसंद आ गया. They sat together. They said, okay, let's go ahead and enter into a formal process and let's close this deal. So उस deal में क्या होगा? So अभी तक तो खाली बातें चल रही थी, right? What will happen as a next step would be there would be information exchange. Thinking Bridge will share the historical numbers, historical earning details, financial statements, and a lot of other details in form of an information memorandum. So it's called IM, that's information memorandum. So सबसे पहले Thinking Bridge का एक information memorandum prepare होगा. It's nothing but just like a pamphlet, right? A very detailed pamphlet. Companies 500 pages का भी बनाती हैं, companies 50 pages का भी बनाती हैं, it depends. Information exchange के बाद जहाँ पे basic details होंगी, it will be like, it will not be like, company will not give away every information it has at this stage. Based on the basic preliminary information, there will be an initial evaluation of the company done by Byju's. Byju's को उस information के basis पे लगेगा that, okay, जो भी आपने हमें दिया है, we are assuming that all of the information is true. There is no error. There is nothing there. उसके basis पे they will give a non-binding offer to Thinking Bridge. Not Thinking Bridge, actually, Thinking Bridge is the company. So Thinking Bridge owners, let's say, अर्चित सर को एक non-binding offer देते हैं that, okay, मैं आपकी company इतने अमाउंट में खरीदूंगा, सब्जेक्ट टू
5, 6, 7 conditions, one of the condition will be subject to performing due diligence, subject to closure of due diligence, right? This is non-binding offer, as the name suggests. It's something which is not binding on either of the parties. It is just like an intent. Sometimes it's called letter of intent, of memorandum of understanding. It's just an intent that, okay, we want to proceed ahead with the transaction. An indicative value of the transaction would be, let's say, 1,000 crore or 10 times of your latest earnings or something like that. After this, there'll be a lot of negotiations that will happen, and then they will enter into a due diligence phase. Due diligence phase would mean, so जो पहले due diligence हुआ था, that was a seller due diligence, because Thinking Bridge themselves wanted to know that, okay, we are going into the market. What are the issues that could come in the valuation of our company when we go into the market? But buyer एक अपना due diligence अलग करेगा, because buyers का perspective एक अलग होगा. So buyers will hire their own set of consultants. And again, it will depend. There's no set rule in the M&A process. It will totally depend on how good the terms and understanding is between any buyer or any of the sellers. So a lot of times it happens कि एक ही due diligence होता है. Seller को अगर नहीं कराना तो वो नहीं भी कराता. But a company, like, if a company is very big, they would want to be prepared in advance. And if they want to spend money, they do a due diligence in advance. But यहाँ पे अब ये होगा, this is called as buy-side due diligence. This is the real diligence जहाँ पे buyer आके सारे numbers check करेगा, whatever was represented, what all earnings have been shown in the information memorandum, whether that's correct or not. Can that be relied on? Can that be used in the valuation of the company or not? Right? And diligence there are lots and lots of types of due diligence. It's not only financial. There is tax due diligence, environmental due diligence, technical due diligence, and a lot of other due diligences. All of those due diligences are carried out in this phase. We'll discuss on different types of diligence as well. And then, of course, next is closing and finalization. And then there will be a binding offer that will be given by Byju's to Thinking Bridge. And then there will be agreement signing. At each step that we spoke about, there are ample of opportunities for chartered accountants like us. We'll speak about what opportunities in the next slide, but probably agreement signing mein lawyers ka role hota hai. Other than that, everywhere it's chartered accountants everywhere, right? And then, of course, there's also a stage called integration. This is more like, let's say Byju's ने अब Thinking Bridge को खरीद लिया है. Thinking Bridge का सर ने तो learning management system लिया है, पुराना सा थका पिता सा, जो आई एम श्योर आप लोगों का मॉड्यूल ऑन होने में भी 10 मिनट लगाता होगा. अब बायजूस को अपने मॉड्यूल में थिंकिंग ब्रिज के मॉड्यूल को मर्ज करना है, इंटीग्रेट करना है. So this is just one of the examples. So that's one of the integration I would say module which Byju's will think about after acquiring Thinking Bridge. There'll be 100 other areas where they would want to integrate Thinking Bridge. So for example, finance hai agar. So if Byju's is acquiring Thinking Bridge, they would want to get rid of the finance, either get rid of or absorb the finance team of Thinking Bridge within Byju's, so that there are some synergies, right? So integration is a very, very big task. Again, there are a lot of opportunities in integration as well. Byju's Thinking Bridge के example में मैंने इतने बता दिए. Just imagine integration opportunities in Vodafone Idea merger. Like, they have thousands and lakhs of stores. Vodafone Idea के सबके stores होंगे. There are like thousands and lakhs of customer support team, finance team, सबको merge करना, integrate करना. All of the processes are different. So that's another task that happens after a legal entity is either merged or acquired. So this is broadly the M&A process, how it looks like. I know it would have been a little bit of a heavy dose, probably. I hope not. But now if anybody has any questions, let's address those now, and then we'll move on to what are the opportunities for us in each of these steps process.
Guys, any doubts in the chat, or you can raise your hands. I think Akshat. Akshat has raised his hand. Akshat, please go ahead. क्यों ड्यू डिलिजेंस करेगा? अक्षत आपकी आवाज नहीं आई। सर सेलर क्यों ड्यू डिलिजेंस करेगा? So Akshat, what happens is a lot of times. Sorry, मेरी आवाज repeat हो रही है अक्षत. हाँ. हाँ जी। Okay, so what happens is Akshat, a lot of times seller doesn't know themselves what is the value of the company or what are the issues that are within the company. आप किसी छोटी कंपनी के लिए मान लो हमारी कोई कंपनी है, we know about in and out about that company, but think about Vodafone Idea की बात करते हैं. Vodafone, before opening up their books in front of Idea for the merger, Vodafone would want to know themselves what is the issue or what are the pain points where Idea can leverage on, where Idea can have a upper hand over Vodafone on those pain points. So Vodafone would want to be prepared in advance. वो पहले से ही prepared रहना चाहता है that okay ये मेरे 5 main issues हैं और ये इसके counter actions या ये उसके safeguards जो मैं पहले से prepare करके चलूंगा. Rather negotiation stage पे जब वो पहुंच जाएगा और Idea उसको बोलेगा बॉस ये 5 issue हैं, then Vodafone will not be prepared and they will have a lower hand in the negotiations. So always in big acquisitions, big mergers, there's always a sell side diligence that is carried out by the companies so that they are prepared in advance. जो stages हमने पिछले slide में discuss करी, strategy and research, screening and bidding, negotiations, integration. So these are all the teams which basically help in all of those stages, right? So strategy and research, mostly it will be, the company's internal mergers and acquisition team, strategy team, corporate finance team, या फिर management consulting firms. Again, screening and bidding, it will be corporations, M&A teams, या फिर investment banks. And then negotiation, transaction validation, execution, all of these teams, right? And then again, integration, companies, ops teams, as well as accounting advisory firms like Big Four. And by the way, did you know, like in audit, I think आजकल तो audit भी virtual हो गया है, but in deals, I would say 95% of the deals there's a virtual data room set up. A virtual data room is like nothing but a very, very secured version of Dropbox in simple terms. आप गूगल करेंगे इंट्रालिंक्स या फर्मैक्स या बहुत सारे ऐसे वीडीआर हैं ऑनलाइन, उनको पैसे देके आप उसमें स्पेस ले लो एंड ऑल ऑफ द डेटा इज अपलोडेड टू अ वर्चुअल डेटा रूम एंड उसमें सेलर को सब दिखता है. ओके किस बायर के किस एडवाइजर ने कौन सा डॉक्यूमेंट कितनी बार खोला, कब डाउनलोड किया, एंड देन the seller can even, whenever they will restrict the access, सब files laptop से अपने आप delete हो जाएंगी या फिर खुलेंगी नहीं उस VDR से. So all of the files are very securely shared over virtual data room. Okay, let's move forward. So all of the specific institutions that we spoke about in the previous slide have been categorized here. So what all opportunities you will have if you enter into these fields. So let's start with companies. If you work in companies, you can focus on getting into mergers and acquisitions team, strategy team, treasury, FP&A, corporate finance, accounting advisory firms, of course, financial due diligence, then tax due diligence, valuation. Other transaction advisory would include value creation, synergies, DDV. There are a lot of other transaction advisory within M&A, then management consulting and strategy. And then of course there is management consulting and PEs and banks, etc. As a chartered accountant, it will be easiest to enter into accounting advisory firms and companies. And there is like a superb path ahead in both of these types of organizations. If you enter into Big Four within this, there's a very good path forward to become a partner of a Big Four. Even not Big Four, I mean, there are like tons of other institutions, tons of other firms as well. In companies as well, there's a lot of opportunities in M&A and strategy teams and whatnot. Of course, in banks, institution, and
management consulting, you may want to, there will be opportunities if you want to move from accounting advisory firms or companies to investment banks, etc. as well. They generally prefer MBA candidates, but nobody is stopping anyone if you're good. Nobody is stopping anyone just because of a degree. I have had a lot of friends who have moved from Big Four to investment bank to private equities. So there are ample of opportunities. I'm sure Achit has already explained you all of the opportunities in the classes, but I would just say one thing. You should start. I know many of you have already started your career, but if you're starting from audit, it will give you a lot of options in the future. I remember when we started a career, I started my career with Achit and a lot of other friends. We all were, very worried about choosing the right field to start with. And we were all fortunate to have started with audit because it really gives a broad perspective of a lot of things. But of course, no other, I would say every other field, even if you start with tax, you will have equal opportunities. ऐसा नहीं है कि कुछ और start करोगे तो उसमें कुछ कम होगा. However, audit से थोड़ा सा ज़्यादा, you will have broad horizon, broad understanding of things, and you can get into a lot of other things easily. Archit sir इस face पे smile दिख रहा है audit master class का. वही बात होगी ना, पहला प्यार तो ऑडिट था हमारा, तो उसके बाद हम कहीं और चले गए. Absolutely. Great. Okay, so this was about M&A. Let's deep dive in a little bit into due diligence, and then we'll move to financial due diligence. So in the M&A process, like we spoke, what is due diligence? It's either a sell-side due diligence, which is here, or it's a buy-side due diligence, which happens at this stage, right? Okay, anyone who can tell what is due diligence? We'll go to Kirti first. Kirti? Hi, sir. Am I audible? Yes, you're audible. Yes. So, from my perspective, I think due diligence is a process in which we check the genuinity of the prospective buyer or the seller of a merger or acquired part. Whether that person is just vaguely entering into this transaction or it is a decisive move by the competitor, just so get into the books of accounts and gain insider information. Due diligence is done to check these procedures and make sure it's a genuine sale and nothing else. Absolutely. Anyone else wants to give a try? Suraj, you want to try? Basically, sir, due diligence means in-depth analysis of the company. There can be several types of due diligence. It can be financial, tax, as you said. But in specific, I want to talk about financial due diligence. Financial due diligence means understanding the financials of the company. It is different from statutory audit because the scope is defined by client and not by regulatory bodies. Okay. Great. Dhruv, Sir, Dhruv, you would like to try? Yeah, is my voice is audible? Yes. Sir, I think in M&A, due diligence means gathering of information, analyzing of information, and its verification in order to struck a profitable deal for both the parties. So basically, gathering, analyzing, and verification of information on both the parts. Okay. That is my understanding of due diligence in M&A. So Right. all of the answers are absolutely correct. You all nailed it. So due diligence is verification. All of what you can see on the slide actually is due diligence, right? There is no set rule like audit. There are no accounting standards or auditing standards which are laid out for auditing. It's all about getting a comfort before you buy anything. So if you're buying a truck or if you're buying a car, right? It's just how you would check whether that's correct or not. अब अच्छे से thinking which बेच रहे हैं बाहर से इतना सजा के,
बायजूस ने जब ड्यू डिलिजेंस किया, अगर वो ऐसा निकला अंदर से, so due diligence is all about getting what you're actually seeing, right? So जो दिख रहा है वही बिक रहा है, कुछ और नहीं. Moving on to the types of due diligence, so there are numerous types. I've just mentioned like 6 types here, right? There's a legal due diligence. All of the legal documents are verified by the lawyers. By legal documents, it would include all of the title deeds, all of the litigations and whatnot, right? HR due diligence, then there's the commercial due diligence, operational, technical, financial, and tax. So there are like numerous due diligences. There's environmental, and it's a lot more than we can actually think about. And a lot of due diligence is actually done whenever a company is bought or sold. So let's say अगर बायजूस ही थिंकिंग ब्रिज को खरीद रहा है, तो सबसे पहले तो कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस करवाएगा. Before even getting into financial and tax, they would want to understand commercial due diligence करवा के कि okay, commercially how much scope there is to grow, right? What does the historical student count look like? What is the number of courses sold? How much is the overall market size? How much Thinking Bridge has captured in the market? How much is there to go in the future? And so on and so forth, right? And then agar koi factory बिक रही है, for example, उसका technical due diligence is most important. A team of technical folks visit the site, they take a look at the machinery. अब capex तो books में fixed asset अगर दिख रहा है 100 crore का, that does not give, I mean, we as financial due diligence advisors can only tell you, okay, capex की aging कितनी है, right? हम बोलेंगे okay 15 साल पुराने capex है, आपको replace करने की जरूरत है. या फिर हम बोलेंगे no, we see a lot of capex replacement expense that is being carried out every year. So we can tell that, okay, machine की हालत ठीक नहीं है. But when the technical folks will really visit the factories or the site, then only will it give the actual insight. Okay, they will tell what is really the capex required in the future, right? Everyone will rely on the numbers for us, but for everything else, there will be a separate team. Legal के लिए एक अलग होगी, technical के लिए अलग होगी, and of course, it will depend on the scale of the business, of course. एक छोटा बिजनेस होगा तो probably इतनी teams की जरूरत नहीं है, but generally इतनी teams होती हैं. Now let's deep dive onto the financial due diligence. इसके लिए हमने सारा कुछ ये background दिया. What is financial due diligence? So financial due diligence, it definitionally it will be described as a project where a detailed investigation and analysis is performed to assess the key issues facing a target's financial business, right? So this really is financial due diligence. Ab practically हम financial due diligence में करते क्या हैं? So let's break. Okay, so what I'm telling you is practically हम क्या करते हैं? So it's primarily, you can say, 3 parts में होता है. First part generally is, we call it business diligence, or to understand the business risks and to understand what are the key business drivers that will be used in the business model, right? So first part would be key business risks क्या होंगे या फिर key business issues क्या होंगे. So for example, अगर हम Thinking Bridge का financial due diligence कर रहे हैं, so सबसे पहला driver होगा कि कितनी classes sold है, right? So first of all, we would want to understand historically कितने batches launch हुए, कितने students ने join किया, all of those metrics, right? Revenue per student कितना था, all of those things. Revenue grow कर रहा है या revenue grow नहीं कर रहा है. Let's say revenue grow कर रहा है, but revenue per student decline हो रहा है, right? So there will be a lot of business risk associated. So that is the first part. That is something which is in India, generally, it is done as part of financial due diligence. Although this is like a, add-on to financial due diligence, not a core output of financial due diligence. This is the first part. Second part is key deal indicators, right? So there are 3 statements that are generally prepared as part of financial due diligence: quality of earnings,
net debt statement, and working capital statement. So I'll come on to that, what those statements are, but that is the core output of financial due diligence, which is used for valuing any company or for inputting the numbers in the business model. And third is, of course, to understand each and every caption of the company, right? आपको financial statement पता है. So third part would be a typical financial due diligence report में there will be a commentary around each and every caption. Okay, fixed assets में क्या है, right? There is plant and machinery के अंदर क्या है, right? या फिर trade receivables में historical turnover days कितने हैं, doubtful debtors कितने हैं, right? Inventory में what is the valuation policy of the company, या फिर do they use FIFO or LIFO? What is the inventory turnover day? So there will be in-depth analysis on each and every caption. There will be in-depth breakdown of each and every caption, which will be again used as an input for the key deal indicators, as I told you. The key deal indicators are quality of earnings, debt and debt-like statement, or sometimes we call it net debt statement, and adjusted working capital analysis. So to understand what these three things are, let's take a look at where they are used, right? So, okay, यहाँ पे let's take a simple example of Byju's and ThinkingBase. Let's continue understanding. Okay, before getting into this, anyone has any question? कोई भी अगर कुछ question है, anybody can, feel free to raise your hand, because once we get into this, you need to like have your basics cleared. Sir, I have a question. Yes, Dhruv. Sir, Yeah, Dhruv, go ahead. I have done my articleship in statutory audit department, and my question is, what kind of a mindset a person should have, who is working in due diligence sector, and what are the ways for me to take transfer in due diligence in long time, say 5 years or 6 years from now? So Dhruv, very good question. I think the best answer is I was like you, I was in statutory audit division and I moved from audit to financial due diligence. When I moved to FDD, trust me, I did not know anything about FDD. मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या होता है FDD में, कैसे होता है, क्या करना होता है. I did not know anything. Neither did the interviewer ask me about due diligence as such. What they asked me was, जो आप कर रहे हो, you are doing statutory audit. They tested me on statutory audit skills. How much I knew about auditing, how much I knew about the things which I was doing, right? Based on which they told me, I mean, of course, if you know things about due diligence, it will be a, I mean, it will be a plus point. But if you don't know it, they don't expect, I mean, if you move as a fresher, they will not expect you to know everything. They will not expect you to know everything. Of course, if you will be moving as an experienced candidate in a later part, I mean, 10 साल बाद अगर आप career में move करोगे, तो of course they will have expectations because you will be expected to manage a team there, right? That is a different thing. But if you will move in the beginning of your career, they will just expect you to know what you are actually doing. Okay. Krupa, you want to go ahead? Krupa, Deepika. Deepika, you are not audible. You need to remove your earphones, I guess. Then, Sir, can you get me? yes, Yeah. now you're audible. Sir, generally, what are the questions they do ask for the fresher for M&A role? Again, they will test you, and frankly, there is no set guideline of what questions are asked. Let us take this question at the end in depth, but I'll just give you a short answer for now. They will take your interview based on your CV. They will never have a set of questions ready for you. They will take a look at what experience you have, and then they will ask the questions accordingly. They will not ask anything outside of your CV. Right. Okay, We'll I take the think questions let's- at the end. Not a problem. Yes, let's start with this concept and let's see what actually is done in financial due diligence.
So as an example, let's assume that Byju's ने Thinking Bridge को value किया है at 1000 crores, right? क्या बात है, अब आपने घी शक्कर सर। अब ये 1000, अब ये प्लीज डोंट माइंड द हैंडराइटिंग। अब ये 1000 करोड़ पे बाइजूस ने थिंकिंग ब्रिज को वैल्यू किया है, तो इसका मतलब क्या है, थिंकिंग ब्रिज को कैसे वैल्यू किया है? आपने सबने एसएम में या कहीं ना कहीं पढ़ा होगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, राइट? सो लेट्स अज्यूम अगले 15 साल 20 साल की प्रोजेक्शंस अर्चित सर ने दी हैं उनको, हर साल की प्रोजेक्शंस का प्रेजेंट वैल्यू निकाल के कंपनी की पूरी बिजनेस की वैल्यू आ रही है 1000 करोड़, राइट? तो 1000 करोड़ उन्होंने कैसे निकाली होगी? फर्स्ट पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड हाउ हैव दे प्रोजेक्टेड द फ्यूचर अर्निंग्स। सो अगले 15 साल में जो भी प्रोजेक्शंस किए गए हैं, अर्चित सर ने बोला रेवेन्यू में मेरी 100% की ग्रोथ होगी या 200% की ग्रोथ होगी। सो 200% की ग्रोथ किस पे होगी? दैट विल बी बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल नंबर्स। So the starting point always in any of the business model or projections or valuation for that purposes will be the historical numbers. Historical numbers का क्या मतलब हुआ है कि past में जो earnings हो चुकी हैं उसको आगे आप project करोगे। So you will have historically you will have, let's say, normal typically due diligence is carried out for 3 years period. So 3 साल का आप earnings निकालोगे, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अर्निंग्स आ रहा है, यू कैन नॉट डायरेक्टली टेक दोज अर्निंग्स, राइट? अब मान लो पिछले साल सर ने एक, अभी बता रहे थे मुझे, पिछले साल उन्होंने एक लैंड बेचा, उसमें उन्होंने 10 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया, थिंकिंग ब्रिज के नाम पे था वो लैंड। अब वो 10 करोड़ का प्रॉफिट को तो आप फ्यूचर में प्रोजेक्ट नहीं कर सकते ना। सो जो पिछले साल की अर्निंग थी उसमें से आपको 10 करोड़ एडजस्ट करना पड़ेगा फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रोजेक्टिंग द अर्निंग्स फॉर फ्यूचर, राइट? So that is not true earnings of the business. ऐसे ही मान लो सर ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो उन्होंने 70 करोड़ रुपए के वन टाइम एक्सपेंसेस कर दिए थे एडवर्टाइजमेंट। आप लोगों ने 3 साल पहले पता नहीं टीवी पे ऐड आते थे थिंकिंग ब्रिज के तो सर ने 70 करोड़ रुपए लगा दिए उसमें, बताओ। अब वन टाइम एक्सपेंसेस जो हुए फर्स्ट ईयर में, अब वो एक्सपेंसेस तो हर साल री इनकर नहीं होंगे ना। तो दैट इज समथिंग which was incurred just for setting up of the business, that will not be incurred on a recurring basis. So that is also unfair to say that okay आप उस expense को project करोगे future में भी, right? So historical, for a due diligence advisor, we give as as a financial due diligence advisor, we give a quality of earnings, right? Quality of earnings. So we give a quality of earnings statement. We say, okay, this is your reported earnings for the last 3 years. And then we will do 10, 15, 20, whatever diligence adjustments we find. A lot of times it is like management खुद भी अपने adjustments देता है। जैसे अर्चित ने जब अपना इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, इफ यू रिमेंबर, उन्होंने जब बाइजूस को दिया तो उसमें हो सकता है अर्चित ने खुद ही something like definitional adjustments, उसको हम बोलते हैं, some definitional adjustments like gain on sale of fixed assets, right? वो इंडस्ट्री में सबको पता है that is not a business income, so उन्होंने अपने आप एडजस्ट करके दे दी। So कुछ मैनेजमेंट एडजस्टमेंट्स होते हैं, कुछ diligence एडजस्टमेंट्स होती हैं, and then finally we arrived at adjusted earnings or adjusted EBITDA. EBITDA is earning before interest, tax, depreciation and amortization. So quality of earning is a very important statement that we prepare as part of due diligence, where we show historical earnings after adjusting any one-time, non-recurring, any extraordinary, any basically anything that is not going to be incurred in the future. एक adjusted income बताते हैं. So how does it look like? Is it looks like something like this, right? So मान लो रिपोर्टेड अर्निंग थिंकिंग ब्रिज की 80 करोड़, 400 करोड़ और 800 करोड़ थी। दिस वाज a reported EBITDA. Then we will do revenue adjustments, right? First is revenue adjustments. So कुछ one time revenue सर ने FY21 में बुक्स बेच के 100 करोड़ रुपए कमाए थे, वो हमने हटा दिया। हमने बोला आप ही फ्यूचर में बिजनेस नहीं करोगे तो आपको इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, राइट? ऐसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज अ नॉन ऑपरेशनल आइटम, सो वी एडजस्टेड दैट।
from 800 crore, we reduced 150 crore of sale of fixed assets. And then we arrived at adjusted revenue, which is nothing but, normalized revenue that can be used for the business projections. Similarly, we have also adjusted EBITDA. These are very, basic adjustments. There's normally in a diligence, there are like a long list of adjustments. So आपने जो वन टाइम रेवेन्यू का इम्पैक्ट किया उसका हमने EBITDA हटा दिया यहाँ से. FA वाला जो एडजस्टमेंट रेवेन्यू की थी उसका EBITDA हटा दिया. मतलब टोटल FA बेचा 150 का था, बट अर्निंग उसमें 10 की हुई थी. नेट प्रॉफिट 10 का हुआ था, वो यहाँ पे हटा दिया. देन वो जो 70 करोड़ के सर ने वन टाइम एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस स्टार्टअप के टाइम पे किए थे, वो हमने ऐड कर दिया. हमने बोला ओके, वी विल नॉट पेनलाइज यू, वी हैव एडेड दैट बैक. की वेकेंट पोजीशन है, सर ने CFO नहीं रखा हुआ, वो अपनी नाइट शिफ्ट लगा के खुद ही CFO का रोल भी पूरा करते हैं. तो बायजूस को एक्वायर करने के बाद तो 10 करोड़ रुपए का एक CFO भी रखना पड़ेगा, तो वो हमने उसकी सैलरी माइनस कर दी. सो दिस इज द एडजस्टेड EBITDA. Now this is a number which will be fed into the business model for the purposes of projections. So this is one of the key statement that we prepare for as part of financial due diligence. Now let's go back and understand this bridge where we were. Last 3 years की normalized earnings, quality of earnings हमें मिल गई हैं, वो हमने business model में डाल ली हैं. वहां से प्रेजेंट वैल्यू बिजनेस की आ गई है 1000 करोड़, राइट? अब सर ने 1000 करोड़ का अपना बिजनेस की वैल्यू दे दिया. वो बायजूस को बोल रहे हैं लाओ जी 1000 करोड़ दो और बिजनेस ले जाओ. However, that's not the case. That's not how it happens. 1000 करोड़ में से सर ने बुक्स में कुछ ना कुछ लोन भी ले रखा है. So whatever loan has been taken in the financial statements will be reduced from the value of business. So जितना भी लोन लिया हुआ है, मान लो 50 करोड़ रुपीस का लोन लिया हुआ है, सो 950 करोड़ रुपीस तो अर्चित को जाएंगे फॉर द परचेज ऑफ थिंकिंग ब्रिज, बट 50 करोड़ रुपीस तो बायजूस लेंडर्स को देगा ना. सो दैट इज एडजस्टेड फ्रॉम द एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ द कंपनी. नाउ देर आर अ लॉट ऑफ डेट लाइक आइटम्स एज वेल. अब जो लोन है वो तो बुक्स में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से दिख जाएगा, तो उसमें फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस एडवाइजर क्या करेगा. बट देर आर लॉट ऑफ डेट लाइक आइटम्स विच आर हिडन इन नेचर. अब मैंने अर्चित को एक बार 20 करोड़ रुपए दिए थे, अभी तक उन्होंने वापस नहीं किए हैं. वो थिंकिंग ब्रिज की बुक्स में वेंडर्स के नाम से आ रहे हैं. सो जो क्रेडिटर्स हैं, अकाउंट्स पेबल या फिर वेंडर्स या क्रेडिटर्स, व्हाटएवर यू कॉल इट, वेंडर्स क्रेडिटर्स में इंक्लूडेड है 20 करोड़ विच इज पेबल बाय थिंकिंग ब्रिज टू मी. इन अ वे दैट इज अ लोन, राइट? दैट इज नॉट अ वर्किंग कैपिटल, बट वो बुक्स में तो क्रेडिटर्स के नाम पे दिख रहे हैं. सो ड्यू डिलिजेंस एडवाइजर क्या करेगा, जाके वो बोलेगा अरे ये 20 करोड़ रुपए क्या है, ओके ये तो आपने अपने फ्रेंड से लिए हुए हैं, ये आपको उनको अलग से देने हैं, दिस इज अ लोन, दिस इज नॉट अ वर्किंग कैपिटल, तो आप इसको एडजस्ट करो. सो लोन पहले था 50 करोड़ का, मैंने जो दिया वो 20 करोड़ और हो गया. सो 20 करोड़ का है तो वो लोन ही, अगर बुक्स में वो लोन की तरह नहीं है, सो दैट इज अ डेट लाइक आइटम, राइट? सो अनदर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट वी क्रिएट for as part of due diligence is a debt and debt-like statement. Debt and debt-like statement. इसमें हम क्या करते हैं, we take out each and every debt or debt-like item and opposite as well. Debt and debt-like. When we say debt and debt-like, it means debt and debt-like as well as cash and cash-like. जितने भी आइटम्स वो बैलेंस शीट में कहीं पे भी होंगे, हम उसके एक अलग से स्टेटमेंट बना के बायर्स एंड सेलर्स को देंगे. हम बोलेंगे ये देखिए, दीज आर ऑल द आइटम्स व्हिच यू बोथ नीड टू सिट टुगेदर एंड नेगोशिएट ऑन, कि ये डेट एक्चुअल में है या डेट नहीं है. डेट है तो आप कैसे उसको ट्रांजैक्शन में ट्रीट करोगे, राइट? सो डेट एंड डेट लाइक स्टेटमेंट किस तरह से दिखती है. सो डेट एंड डेट लाइक स्टेटमेंट नॉर्मली लेटेस्ट पीरियड की बनाई जाती है. इट इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर लास्ट 3 पीरियड्स, इट इज फॉर द लेटेस्ट पीरियड. ये हमने एक 31 मार्च 22 की बनाई है. सो 20 करोड़ का मैंने आपको 50 बोला था, तो आप 20 मान लीजिए. सो 20 करोड़ का बुक्स में डेट है ऑलरेडी, उसमें से हमने माइनस कर दिया 10 करोड़ का कैश.
बुक्स में ऑलरेडी 10 करोड़ का कैश है, तो ऑब्वियसली डेट कम हो गया. देन देयर इज अ रिस्ट्रिक्टेड कैश. सम लेट्स से 10 करोड़ का कैश है, उसमें से 2 करोड़ रुपए उन्होंने जीएसटी डिपार्टमेंट में एज अ डिपॉजिट दिया हुआ है, राइट? So that is a lien against something, right? So that can't be used. So that is as good as debt. So that will not be used as cash and cash equivalent. So 12 crore का reported net debt है, right? However, there are other items which are debt like in nature that will be adjusted. So quickly एक बार देख लेते हैं. So first one is age payable. Age payable means Debit. let's say vendor को, अर्चित सर को लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का जो मॉड्यूल है उसको पैसे देने थे, उससे झगड़ा चल रहा है, उन्होंने उसको 2 करोड़ रुपए रोक के रखे हुए हैं. So that 2 crore rupees actually is not payable in the normal course of business, just because of some dispute that is overdue, that is aged, and that is debt in nature. 2 करोड़ आप किसी के नॉर्मल साइकिल से ज्यादा रोक के अगर बिजनेस में यूज करोगे, that is as good as debt, right? So वो 2 crore rupees debt like हो गया. मैंने जो लोन दिया वो debt like हो गया, right? There is some committed capex, already किसी से साइन कर दिया कि हम 3 करोड़ का ये खर्चा करेंगे, so that is a debt like item, right? अर्चित थिंकिंग ब्रिज ने अर्चित सर को प्रॉमिस किया हुआ है कि अगर बायजूस को सेल हो गई तो 10 करोड़ रुपए मिलेंगे. So 10 crore is also a debt like in nature. Then there will be tax exposures like tax due diligence, या फिर there are other due diligence work streams जो भी काम कर रही हैं, उन सब में से कोई भी अगर एक्सपोजर निकलता है, मान लो कोई एनवायरमेंटल एक्सपोजर है, एनी एक्सपोजर दैट कम्स आउट, सो वो भी यहाँ पे हम प्लग कर देंगे. नॉर्मली हम उसके लिए एक एनक्यू लिखते हैं, which is which we call it non-quantifiable, but this is something which I mean we quantify as we move forward. अगर हमें quantification नहीं पता, so we say okay this is NQ. आप अपने टैक्स एडवाइजर से या फिर एनवायरमेंटल डीडी या टेक्निकल डीडी जो कर रहे हैं, आप उनसे एक्सपोजर लेके आप प्लग कर दीजिए, राइट? So these are debt like items, and then debt and debt like item total 47 crore हो गए अब, right? Which will be adjusted from the 1,000 crore enterprise value that we spoke about earlier. Just I thought I'll touch upon last one also. This is like, okay, so in M&A there are ways and solution to deal with every problem differently. Every deal I learn there's a different way to deal with every problem, right? अब मान लो ये ऊपर वाले आइटम तो चलो फ्रीज हो गए, दोनों ने, बायजूस ने भी, थिंकिंग ब्रिज ने भी, सबने मान लिया दैट ऑल ऑफ दीज आर डेट लाइक इन नेचर, इसको एडजस्ट कर दो एंटरप्राइज वैल्यू में, राइट? बट समथिंग लाइक लिटिगेशन, अब सर के एक स्टूडेंट ने एक केस किया हुआ है, वो बोल रहा है कि आपने मुझे अच्छे से नहीं पढ़ाया, अब आप मुझे 10 करोड़ रुपए दो. अब 10 करोड़ रुपए का जो केस है, अब ना तो वो लाइबिलिटी है, ना वो मतलब हाउ विल यू ट्रीट दैट इन अ ट्रांजैक्शन? 10 करोड़ रुपए बायजूस तो बोलेगा कि जी आप माइनस कर दो, हमें तो आप 1000 करोड़ में से माइनस करके मैं आपको दूंगा. अब अर्चित सर बोलेंगे यार 10 करोड़ तो वो आएगा ही नहीं, अर्चित सर की लीगल टीम बोल रही है ये क्लेम आ ही नहीं सकता. सो ऐसे कुछ केसेस में क्या होता है, बायजूस विल से ओके मैं एक काम करता हूँ, ये 10 करोड़ रुपए मैं एस्क्रो में डाल देता हूँ, ना आप यूज कर सकते हो ना मैं यूज कर सकता हूँ. जब ये सेटल हो जाएगा मामला within let's say 1 year, 10, 5 years, whatever duration both of the parties decide, उसके बाद ये पैसा रिलीज हो जाएगा. अगर ये पैसा मान लो it is settled in the favor of Thinking Bridge, then it will be released to Archit, or if it is settled in the favor of student, then it will be released to student from Byju's as a liability settlement, right? So इस तरह से again these are just a few examples of debt and debt like items that are very common, but there is like again a long list and it's very dependent on each of the business. Let's go back onto this bridge. अभी तक हमने क्या देखा? सबसे पहले हमें चाहिए कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू. हमने एंटरप्राइज वैल्यू लगाई, ओके, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स के बेसिस पे वी अंडरस्टूड दैट 3 साल की क्या नॉर्मलाइज अर्निंग्स थी, उसके बेसिस पे प्रोजेक्शंस किए M&A टीम ने या फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस टीम ने कंपनी की. वो बिजनेस मॉडल बन के तैयार हुआ, वो बिजनेस मॉडल वैल्यूएशन टीम के पास गया, वैल्यूएशन टीम ने कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू निकाली बेस्ड ऑन दैट बिजनेस मॉडल एट 1000 करोड़ रुपीस. 1000 करोड़ में से हमने डेट एंड डेट लाइक आइटम्स फाइनल कर लिए, कितने हैं वो उसमें से माइनस हो जाएंगे.
वो अर्चित सर को नहीं मिलेंगे बिकॉज दोज आर द डेट सिटिंग इन द बुक्स। अब आ जाते हैं वर्किंग कैपिटल पे। सो व्हाट डज वर्किंग कैपिटल मीन? कंपनी खरीदने के लिए, सॉरी, कंपनी चलाने के लिए आपको कोई भी पैसा अगर बिजनेस में चाहिए, इन सिंपल वर्ड्स दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। It's a little different than how we have learned in audit or in accounting standards always. Like we have read, like we have always learned current assets minus current liabilities is working capital. But in a deal scenario, working capital really is anything you need to run a business that is not capex or debt in nature is working capital, right? Security deposit, चाहे वो long term हो या short term हो, debtor, creditor, inventory, everything is working capital. However, अब आप ये बताइए कि वर्किंग कैप, जब आपने बिजनेस की वैल्यू लगाई 1000 करोड़, उसका मतलब है 1000 करोड़ में हम बिजनेस लेंगे, विच मीन्स 1000 करोड़ में जो आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए बिजनेस चलाने के लिए, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। वर्किंग कैपिटल कोई अलग से पैसे नहीं होते। आप वर्किंग कैपिटल सिंपल फिलहाल इस एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए इट इज डेटर प्लस इन्वेंट्री माइनस क्रेडिटर। अगर वर्किंग कैपिटल 50 करोड़ है, सो दैट 50 करोड़ इज इंक्लूडिंग इन 1000 करोड़, उसके कोई 50 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा नहीं है। हाउएवर, हाउ विल यू नो दैट वर्किंग कैपिटल जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जिस डेट पे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वो वर्किंग कैपिटल सही है टू रन दैट बिजनेस? अभी मैंने आपको बताया था कि 20 करोड़ रुपए का लोन जो सर ने मुझसे लिया था वो क्रेडिटर में डाल रखा है, वो एक्चुअली डेट में नहीं डाल रखा। सो क्रेडिटर का मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब 20 करोड़ रुपीज से वर्किंग कैपिटल कम है अभी बुक्स में। इसका मतलब एक्चुअल वर्किंग कैपिटल शुड बी नॉट 50 विच इज रिपोर्टेड, इट शुड बी 50 प्लस 20। एक्चुअल वर्किंग कैपिटल शुड बी 70 करोड़ रुपीज। सो इसका मतलब देर इज अगेन अ नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एडजस्टेड वर्किंग कैपिटल ऑफ अ बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ M&A। वरना तो अर्चित सर बायजूस को कुछ भी चिपका देंगे, उसमें 10-20 करोड़ का डेट सक्षम को है, 50 करोड़ का और किसी से डेट लेके वेंडर्स में ही डाल के अगर मान लो कंपनी दे देंगे, सो बायजूस विल in a way get more debt, right? So उसके लिए financial due diligence का third most important statement है which we call as, sorry, adjusted net working capital statement। अब इसके कई अलग अलग नाम हैं, कुछ लोग उसको adjusted working capital बोल देते हैं, या कुछ लोग net working capital statement, normalized working capital statement, और किसी भी नाम से आप बोलना चाहो। Let's take a look at what does working capital look like. So इसको आप प्लीज इग्नोर करिए, नेट डेट नहीं है, दिस शुड बी नेट वर्किंग कैपिटल। सो आपकी वर्किंग कैपिटल में, रिपोर्टेड वर्किंग कैपिटल में क्या है? डेटर्स है, इन्वेंट्री है, क्रेडिटर्स है। जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स जस्ट अज्यूम कि ये 3 चीजें हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि 2 करोड़ के एज पेबल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल के जो डिस्प्यूटेड थे वो एक्चुअल में क्रेडिटर्स एज्ड है, तो वो हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। हमने बोला आपके 50 करोड़ रुपीस के जो क्रेडिटर्स है दैट शुड एक्चुअली बी नॉट 50, इट शुड बी 48। 2 करोड़ तो एज्ड है, वो हमने यहाँ पे हटा दिए। सो नेगेटिव इज लायबिलिटी, पॉजिटिव करके हमने नेगेटिव लायबिलिटी को हटा दिया। लोन फ्रॉम सक्षम जो हमने बात की, जो 20 करोड़ रुपए वो हमसे लेके बैठे हैं, अभी तक दिए नहीं है, वो हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। वी हैव अगेन इंक्रीज्ड द वर्किंग कैपिटल और रिड्यूस द क्रेडिटर्स, राइट? थोड़ा सा एनडब्ल्यूसी में कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सा प्लस माइनस की कॉम्प्लेक्सिटी होती है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, प्रॉब्ली समटाइम व्हेन वी डू अ वेरी डीप डाइव प्रैक्टिकल केस स्टडी फॉर दिस समटाइम लेटर, उस टाइम पे और ये प्लस माइनस में हम डिबेट करेंगे। बट यहाँ पे अब एडजस्टेड एनडब्ल्यूसी आ गया है 9 करोड़, 70 करोड़ और 152 करोड़। स्टार्टिंग बिजनेसेस में it can be seen as an absolute figure also, otherwise generally it is seen as a days, because अगर बिजनेस ग्रो हो रहा है, 80 करोड़ रेवेन्यू था, फिर 800 करोड़ हो गया है, तो अगर आप एब्सोल्यूट फिगर्स में देखोगे तो 9 करोड़ से एनडब्ल्यूसी 150 करोड़ हो गया, which will not make sense. So generally it is seen in terms of days, मतलब 800 divided by 365, sorry 152 basically divided by 800 into 365, तो मतलब पर डे के हिसाब से आपके कितना, हाउ मेनी एनडब्ल्यूसी टर्नओवर डेज, सो 69 डेज का एनडब्ल्यूसी था मार्च 22 पे। सो दिस इज योर एडजस्टेड वर्किंग कैपिटल डेज।
अब बायजूस ने बोला नहीं नहीं हम भी बिजनेस करते हैं, आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो, हमें तो मिनिमम 75 डेज की वर्किंग कैपिटल चाहिए। सो अभी 69 डेज के हिसाब से वर्किंग कैपिटल आ रही है 152 करोड़, 75 डेज के हिसाब से आती है 164 करोड़। सो बेसिकली अर्चित सर ने दी है उनको, अर्चित सर ने अग्री कर लिया ठीक है मैं आपको 75 डेज की वर्किंग कैपिटल दूंगा, which means 164 करोड़ की वर्किंग कैपिटल देंगे, बट दी है 152 करोड़, which means there is a shortfall of 12 करोड़ जो कि अगेन पैसे में से कटेंगे। So let's come back onto the bridge. So whatever was the total value of the business minus whatever is the debt plus whatever is the actual working capital minus whatever is the target working capital will be settled by Byju's, will be paid by Byju's to Archit sir for purchase of Thinking Bridge. So this is the, it is called EV to equity bridge, enterprise to equity bridge. So ये bridge कभी भी diligence में काम नहीं आता. So we never prepare this bridge. We discuss this bridge of course, but there is never a formal deliverable for the bridge. The formal deliverables are these three items: quality of earnings, net debt and debt-like items, working capital analysis. जो तीन statement we just discussed are the formal financial due diligence outputs that are used to arrive at this bridge. So I just introduced this bridge as a concept so you know why do we do financial due diligence. And finally, if in our example, if 1,000 crore was the enterprise value, 47 crore was debt and debt-like items, actual working capital was 152 crore and target that was agreed was 164 crore. तो अब जो कंपनी की फाइनल बैंक अकाउंट में जो अर्चित सर के पास जाएंगे वो 941 करोड़ रुपए जाएंगे बायजूस से. So this is what we do in due diligence. And again, I mean, not the bridge, but yes. So these three things are called the key deal consideration or key deal indicators, or there are several names. You'll go to different firms, you will see different names. In statements का भी अलग अलग नाम होता है, कोई debt and debt like items बोलता है, कोई net debt statement बोलता है, सबके अलग अलग नाम है. But conceptually these are three outputs that are used in a financial due diligence report and used in the valuation of the company. Right. एक रिक्वेस्ट आ रही है सर कि एफडीडी की मास्टर क्लास कब आएगी? एफडीडी की मास्टर क्लास कब आएगी ये अर्चित सर बताएंगे. अर्चित सर को पहले अपना लोन पे करना पड़ेगा 20 करोड़ वाला, फिर ही आएगी. ये अभिषेक कौन है भाई बदमाश? पहले तो ये बताओ. सही आ गए, हैंड रेस करा हुआ है. हाँ जी अभिषेक, आपने फर्स्ट टाइम वीडियो ऑन करी है शायद. नहीं सर, मतलब आज की क्लास में भी करिए रिसेंटली, वैसे तो ऑन ही रखता हूँ. ग्रेट ग्रेट. हाँ जी पूछिए ना डाउट. सर जैसे सेलर ने अपनी पहले वैल्यूएशन रिपोर्ट दे दी तो बायर उसकी ड्यू डिलिजेंस करवाता है, तो जो सेलर की तरफ से वैल्यूएशन रिपोर्ट आती है वो भी उनकी ड्यू डिलिजेंस की टीम ही प्रिपेयर करती है? नहीं. सो अभिषेक, सेलर कभी भी अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं देता. ओके. सेलर, so valuation is a very subjective thing. Okay, so as a process क्या होता है, सबसे पहले सेलर एक ड्यू डिलिजेंस करवाएगा, उसके बाद एक रिपोर्ट आएगी. फॉर एग्जांपल एक बिग फोर से उसने ड्यू डिलिजेंस करवा लिया, उसके बाद एक रिपोर्ट आएगी. उस रिपोर्ट में मैनेजमेंट व्हाटएवर चेंजेस करवाएगा, फैक्चुअल चीजें ठीक करवाएगा, जो भी कराएगा. उसमें ये तीन स्टेटमेंट होंगे: क्वालिटी ऑफ अर्निंग, नेट डेट एंड डेट लाइक आइटम, वर्किंग कैपिटल एनालिसिस. राइट. अब क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स, डेट एंड डेट लाइक, वर्किंग कैपिटल में जो भी फाइंडिंग्स हैं उसका इंटरप्रिटेशन कैन बी वेरी डिफरेंट बाय अ सेलर और अ बायर. राइट. सो अपना इंटरप्रेट करके सेलर, अब इट विल डिपेंड अगेन सेलर की अगर खुद की वैल्यूएशन टीम है या कोई M&A टीम, स्ट्रेटजी टीम है, तो उनके खुद के लोग बिजनेस मॉडल बनाएंगे एंड एक वैल्यूएशन तैयार करेंगे. राइट. अगर नहीं है तो वो किसी को आउटसोर्स करेंगे, किसी कंसल्टेंट को, उनसे वो बिजनेस मॉडल बनवाएंगे एंड वैल्यूएशन फाइनल करवाएंगे. उसके बाद दे विल इनवाइट बिडिंग, they will invite people for bidding process, right? And then they will, based on जिसके साथ नॉन बाइंडिंग ऑफर साइन हो गया, वो उनको अपनी डिलीजेंस रिपोर्ट शेयर करेंगे. एंड ऑल ऑफ द डिलीजेंस रिपोर्ट शेयर करना इज नॉट सो इजी
इट्स नॉट लाइक कि चलो किसी को बस ईमेल कर दे, देयर आर लॉट ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स साइन कि आप किसी और को शेयर नहीं करोगे, दे विल बी यू नो NDA साइन एंड लॉट ऑफ थिंग्स विल बी डन, बट इन सिंपल टर्म्स उनको अपनी रिपोर्ट दे दी उन्होंने। अब वो वैल्यूएशन उनको नहीं देंगे, वो उनको बोलेंगे आप रिपोर्ट पढ़ो, आप अपनी तरह से इंटरप्रेट करके हमें बताओ कि व्हाट वैल्यू यू वांट टू बिड फॉर आवर कंपनी, राइट? एंड देन बोथ ऑफ देम विल सिट ऑन अ नेगोशिएशन टेबल, दे विल से ओके, वो सामने बायजूस बोलेगा कि अच्छा मैं आपको 900 करोड़ दूंगा, अर्चित सर यहाँ पे बैठे हैं वो बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को तो 1100 करोड़ चाहिए, मेरा ये मॉडल है। फिर वो नेगोशिएशन होंगे, अच्छा ठीक है एक्सपेंसेस लेट्स से, अच्छा आपने एक्सपेंसेस का कितना रन रेट लिया है फ्यूचर में, नहीं नहीं मेरे मेरे ये कॉन्टैक्ट्स हैं, या फिर मैं फ्यूचर में ये एक्सपेंसेस इस लेवल पे लिमिट कर सकता हूँ, या फिर अर्चित से बोलेंगे अच्छा नहीं नहीं देखो ये इतने स्टूडेंट्स ने तो ऑलरेडी नेक्स्ट ईयर का कमिटमेंट दे दिया है, बैचेस ऑलरेडी साइन कर लिए हैं, सो रेवेन्यू आप अपने मॉडल में ज्यादा हायर पकड़िए, कम मत पकड़िए। तो नेगोशिएशन चलेगा, सब कुछ होगा, फिर वो 1000 करोड़ पे डील क्लोज होगी। एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपना मॉडल देगी भी तो वैल्यूएशन मॉडल कभी नहीं देगी, देगी तो बिजनेस मॉडल फिर भी दे देगी। व्हाट इज द डिफरेंस? ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बिजनेस मॉडल में बस प्रोजेक्शंस होती हैं कि रेवेन्यू पिछले 3 साल हिस्टोरिकल इतना, आगे 10 साल का इतना इतना, विद द अजम्पशंस, सो दैट द बायर कैन प्ले अराउंड। Okay. वैल्यूएशन में थोड़ा सा देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ परसेंटेजेस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कितने में कितने किसको मिल रहा है, वो सब होता है। सो they never share the valuation as such because cost of equity, cost of debt, everything is different for each of the company. Okay. So second thing के मतलब एक like company candidate में क्या देखती है for M&A और FDD, like what skills or what thing they are looking into the candidate? देखो you need to, okay, so what if you're applying for a fresher, right? I applied as a fresher and I'll again repeat myself, I did not know anything about FDD. Frankly, I did not know. मेरे एक friend ने मुझे, one of my friends was already in FDD profile. I sat with him for 2 or 3 hours. 2-3 घंटे की नॉलेज थी बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं पता था। What they will test you is how much do you know about the financial statements, how much have you have gathered in audit, because audit में आप financials को read करना, financial देखो audit और financial diligence में अभी we'll just speak about that also, ज्यादा कुछ difference नहीं है। The only difference is audit is very structured, everything is laid out in accounting standards, auditing standards, सब कुछ laid out है। Diligence is very flexible, जो buyer और seller negotiate करेंगे उस तरह से चीजें चलेंगी। It more Right? interpretation of things. Exactly, exactly, and it will, but अब इन्वेंट्री में क्या इश्यूज हैं वो ऑडिट में और डिलीजेंस में सेम रहेंगे। आपको अगर ऑडिट में इन्वेंट्री को ऑडिट करना आता है कि आपका वैल्यूएशन खराब है, या फिर आपने फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया, या फिर आप फीफो बोल रहे हो आपका वेटेड एवरेज क्यों नहीं है, या फिर आपको मतलब यू हैव नॉट डन योर जो बॉम्ब अकाउंटिंग होती है वो ठीक से नहीं करी, राइट? बिल ऑफ मटेरियल जो भी होता है। सो अगर आपको ऑडिट में वो सब आता है, इट इज एग्जैक्टली द सेम इन FDD। इट्स ओनली दैट ऑडिट में आपका ultimate output is to give a true and fair opinion to the stakeholders, but diligence में ultimately you have to just take another step and see how to translate that error into a valuation adjustment। अगर इन्वेंट्री में आपने गलती निकाली कोई, ऑडिट में आप क्या करोगे? ठीक करा दोगे, या फिर SUAD लेके वो अनएडजस्टेड ऑडिट डिफरेंस साइन करा लोगे रिप्रेजेंटेशन लेटर में, whatever you do, right? FDD में you just have to take another step and say okay, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में एरर है, उसकी वजह से 4 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री अंडर वैल्यूड है। इसका मतलब आप 4 करोड़ वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज करोगे तो इसमें सेलर का फायदा हो गया, राइट? सो It's like a close scrutiny of the financials, like this type. exactly. And thirdly, sir, मैंने एक चीज सुनी है कि like it's what very demanding, मतलब demanding means like it's very hectic, strict timelines होती हैं इसमें FDD में। So is it true? टाइमलाइंस होती है। सो अभिषेक, व्हाट हैपेंस इज जब बाइंडिंग ऑफर, सो नॉन बाइंडिंग ऑफर के बाद, मैं एक बार ना उस स्लाइड पे आ जाता हूँ, इट विल गिव यू अ गुड पर्सपेक्टिव। ये जो नॉन बाइंडिंग ऑफर यहाँ पे साइन होता है ना, ये नॉन बाइंडिंग ऑफर के बाद ना, अब थिंकिंग ब्रिज के पास यहाँ पे आपको याद है बिडिंग राउंड में 4-5 बायर थे, उन्होंने बोला हम बायजूस के साथ आगे जाएंगे। तो नॉन बाइंडिंग ऑफर के बाद अर्चित बोलेगा कि बॉस यू हैव एक्सक्लूसिविटी ऑफ, लेट्स से वो डिपेंड करता है कमर्शियल टर्म्स पे, लेट्स से 30 days, यू हैव एक्सक्लूसिविटी फॉर 30 days टू रीच एट दिस स्टेज। अगर 30 दिन में आपने मेरे को बाइंडिंग ऑफर दे दिया तो ठीक, वरना मैं दूसरे बायर के पास जा रहा हूँ।
So Okay. because of this reason थोड़ी स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस होती हैं. अब वो 30 डेज अगर मिल गए बायजूस को, तो इसमें ऑडिट की तरह नहीं होता कि अच्छा स्टार्ट हो रहा है, चलो ऑडिट की प्लानिंग होगी, प्रॉपर सब कुछ होगा. इसमें होता है तो वो बायजूस फोन करेगा, अब हमारा एक्सक्लूसिविटी स्टार्ट हो गया, आज शाम से डिलीजेंस स्टार्ट करना है. सो Okay. यू हैव 30 डेज. अब 30 डेज में उनको सब कुछ रैप अप करना है. नॉर्मली 30 से 45 से 60 डेज का एक्सक्लूसिविटी होता है. अब उस Sir, पीरियड में सब कुछ क्लोज करना है, डिलीजेंस भी करना है, वैल्यूएशन भी क्लोज करना है, एवरीथिंग यू हैव टू डू. सो यू हैव टू, आई मीन, कोप अप विद द क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशन लिटिल बिट. हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि मतलब कि दिन रात काम ही करना है. आई मीन, ऑफ कोर्स ज्यादा एक्सपेक्टेशन है तो देयर विल बी मोर मैन पावर इन्वॉल्वड बाय द कंसल्टेंट, बट हाँ, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन होती है. sir, can we say like I have done the KPI certification with my articleship. So can we say it like similar like that? सॉरी, Yeah, आई एम नॉट अवेयर ऑफ कौन सा सर्टिफिकेशन अभिषेक. के KPI, key performance indicator certifications. आई एम नॉट अवेयर, आई एम सॉरी, मेरे को केपीआई सर्टिफिकेशन के बारे में आइडिया नहीं है. No. सो what is the difference between audit and financial due diligence? So audit तो अभी अर्चित सर आपको सिखाते जा रहे हैं. You all already know a lot about audit. FDD में whatever in the short duration we learned. So let's just go topic by topic. So number one, scope. So scope is very, very much defined in audit. When I used to be in audit, we used to have that. We used to download it from the ICI website, and we used to, even have every letter and every word written by ICI, even for engagement letter, scope, everything, right? But ऐसा due diligence में नहीं होता. There is no body. I mean, ICI is ultimately a guiding authority for all of the entire profession. However, उसमें क्या करना है कवर, क्या नहीं करना, there is no standard as such. It depends on the scope of work, which is called as SOW. SOW क्या डिफाइन करता है, बायर या सेलर जो भी, अगर हम सेल साइड डिलीजेंस कर रहे हैं या बाय साइड कर रहे हैं, what are they asking us to do is generally what we do. And of course सारी कंपनीज को ये नहीं पता होता ड्यू डिलिजेंस में क्या करना होता है. So we have standard scope of work. So we generally go with that standard scope of work कि हमें ये चीजें करनी है. However, there are a lot of companies जैसे बायजूस है. अब हमसे ज्यादा बायजूस को पता होगा कि what are they looking for in thinking brain. They will know what are the pain points of this industry. So they will ask us कि बॉस ये SOW में आपने जो ये 100 चीजें लिखी हैं, इसमें से ये आप एडिट करिए, इस पे और फोकस करना है, right? This will be, diligence will be, focused on deal issues. There will be testing, but again limited testing. मतलब हम जैसे ऑडिट में वाउचिंग करते हैं वैसे वाउचिंग नहीं करते. बट अगेन आई हैव डन 100% वाउचिंग आल्सो इन डिलिजेंस. इट विल डिपेंड ऑन द क्लाइंट. एक रियल एस्टेट डील हम कर रहे थे, उसमें कंफर्ट नहीं था क्लाइंट को, इन्वेस्टर को. सो दे आस्क्ड अस टू वेरीफाई ऑल ऑफ द कस्टमर एग्रीमेंट्स. सो हमने पढ़े उसको. Period covered, like, Archit, you asked that question, somebody asked in the team. So normally it is 3 years. However, it's not defined anywhere. नया बिजनेस है, मान लो 2 ही साल हुए हैं तो 2 साल करेंगे. कंपनी बहुत पुरानी है तो नॉर्मली 3 साल करेंगे. अगर हमें पता है कि पिछले 4th ईयर में समथिंग हैड हैपेंड, तो नॉर्मली हम खुद ही बोल देंगे कि आप 3 की जगह 4 साल करो. 90% केसेस में 3 साल होंगे. बट मोस्ट, मतलब इट डिपेंड्स. अगेन द रियल एस्टेट डील आई वाज टॉकिंग अबाउट, उसमें वी कवर्ड all the years since inception. We covered 15 years. So it depends. I mean, it depends. But 3 years is standard. 90%, 95%, 3 years. Objective, again, audit mein objective is to, give an opinion, true and fair hai, nahi hai, modified, unmodified opinion. यहाँ पे objective, like I told you, one is the KDIs, which is Q of E, debt and debt-like, and working capital. And B is the identification of deal issues specific to the transaction. Deliverable, यहाँ पे एक audit report होती है. यहाँ पे deliverable is, again, it depends on country to country. Like India में generally deliverable format is PPT report accompanied by an Excel data pack. US में, like, I've just started working there, and mostly I've seen everybody just wants Excel, right? They just focus on Excel data pack. Excel के अंदर ही commentary side में box में add कर दो. But they want reports, but when they go for fundraising, जब उनको lenders को report दिखानी है कि okay, this is the company we are asking for money for, उस time पे वो report मांगते हैं. I mean, it depends on market to market, and it depends on the requirement. Again, deliverable format is the same we just covered.
Stakeholders, यहाँ पे there's audit में there will be wide range of stakeholders. I mean, आप MCA 21 पे जाके किसी भी कंपनी की audit report download कर सकते हो. But FDD is like very, very, very closed group में होता है. It's only for buyer and seller, and in some instances lenders and secondary investors. It's very restricted. Audit report की तरह नहीं है that you can, you have easy access. इसके लिए you need to sign a lot of release letters, we call it, with the issuer of the report that, okay, there'll be hold harmless letter. There will be a lot of documentation involved for circulation of any of the reports. Moving on to professionals, of course, you need to be a chartered accountant for auditing in India. But for FDD, there is no set rule. Although in India, FDD industry, I would say 80% of the people are chartered accountants, but there are other 20% people who are just graduates or graduates in MBAs and whatnot. Audit is, of course, post-mortem analysis. FDD is basically post-mortem, but it is required for future decision making. It's not very restricted to historicals. So that was it. I think this was all that I had to cover.